Hello everyone. This is our ninth video in the comparative political analysis UGC NET PYQ video series. In this video series, we will be covering all the PYQs asked by UGC NET from 2014 up till June 2025 for each topic. So this video is regarding all the miscellaneous topics which are left from comparative politics. So the first question which was asked in December 2015 was arrange the steps in the working of the general system of proportional representation in the correct sequence. इस क्वेश्चन में हमें जो PR सिस्टम होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है उसके जितने भी स्टेप्स हैं वी हैव टू अरेंज देम प्रॉपरली इन अ सीक्वेंस. ठीक है. So I'll just tell you about the steps which are involved in the proportional representation system and accordingly we'll answer the question. So the first step which is generally carried out is that party lists are formed. ठीक है. So इसमें क्या रहेगा, each party will put up a list of candidates equal to the number of seats being fought. ठीक है. So this will be the first step. Second step will be that the type of lists will be classified. So there are generally two types of lists, that is closed or open list. And open list generally allow voters to indicate the individual candidate preferences which they want. ठीक है. So this will be the second step. उसके बाद में the order, so the according to the votes the candidates are arranged in a specific order. ठीक है. So that will be the third step. So the candidates are arranged in order of the votes they receive. Then the fourth step is regarding the leftover votes. So the leftover votes or the remainder votes are divided up between the candidates. So that will be the fourth step. ठीक है. So according to this, the correct answer is the third option. Next is July 2016 का question है. In a single transferable vote system, each voter is required to which of the following? Indicate one preference more than the seats to be filled up. Indicate one preference less than the seats to be filled up. Indicate as many preferences as there are are candidates to be elected, and indicate only a single preference. तो single transferable vote system में we have to indicate as many preferences as there are the candidates to be elected. ठीक है. तो equal होता है उसमें. So the third option will be the correct answer. Next question November 2017 का है. This is match the following question. We have to match the countries with their respective electoral systems. So first past the post system ये USA में होता है and this is also a characteristic of Indian elections. ठीक है. फिर second ballot system. This is carried out in France. C है alternative vote system. This is carried out in Australia. And the last one, additional member system. This is carried out in Germany. ठीक है. So the correct answer according to this will be the fourth option. Next question October 2020 का है. Which one of the following election systems does not ensure representation to minorities? Does not ensure. ठीक है. तो इसमें क्या आएगा? See, proportional representation, cumulative vote system as well as the limited vote system, all of the three ensure representation to minorities. However, the relative majority system is the one जिसमें minority representation is not guaranteed. ठीक है. So the relative majority system, which is also known as the first past the post system, is a winner takes all system. ठीक है. It tends to reward the largest party or group in a constituency, making it difficult for smaller minority parties to gain representation without geographically concentrated support. Next question was asked in June 2019. Statistology is the study of. So this is a very simple question. The answer is political parties. ठीक है. Next question.
दिसंबर 2019 का ही है. Which one of the following is not a function of political parties? Not a function पूछा है. सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट इट इज़ अ फंक्शन. ठीक है, तो ये ये फंक्शन होता है. Interest articulation is also a function. Interest aggregation is also a function of political parties. However, rule adjudication is not a function of political parties, it is a function of the government which is in power. ठीक है, गवर्नमेंट और जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम्स होते हैं हमारे कंट्री के, पुलिस etc., those are responsible for the law and order and rule adjudication. I'm sorry, not exactly the government, judiciary भी, जुडिशरी आएगा इसमें, मैंने ध्यान से नहीं देखा. रूल एडजुडिकेशन विल बी डन बाय जुडिशरी. ठीक है, सो दी कर दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है, फोर्थ वन. नेक्स्ट है विच, दिस इज नवंबर 2021 का क्वेश्चन है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? सो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल्टरनेट गवर्नमेंट. तो देखो, ये तो होता है पॉलिटिकल पार्टी का ही फंक्शन है ये. ठीक है, उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल एजुकेशन टू द पब्लिक, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. लास्ट है टू कंट्रोल द जुडिशरी, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन. सो द करेक्ट आंसर will be the fourth option. The next question requires us to arrange the political parties in chronological order as per their year of formation. ठीक है, तो इसमें this is a tough question since they have asked political parties of other countries as well. So I'll just tell you the chronology. थोड़ा थोड़ा आप ईयर्स याद रखिएगा. जो मेजर, जैसे यूएसए की डेमोक्रेटिक पार्टी इज़ अ मेजर पार्टी. ठीक है, इनके ट्राई टू रिमेंबर द ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन. बाकी जैसे यूक्रेन वगैरह की पार्टीज़ का इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर सिंस then it will become endless na, syllabus will become endless if you start going after such minute details as well. ठीक है, तो मेजर पार्टीज़ का आप याद रखिएगा. जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी है यूएसए की, इट वाज फॉर्म्ड इन 1828. फिर लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा, दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वाज फॉर्म्ड इन 1867. ठीक है, फिर है अवामी लीग ऑफ बांग्लादेश वाज फॉर्म्ड इन 1949. देन बीजू जनता दल फ्रॉम इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 1997. and servants of the people Ukrainian party है ये, this was formed in 2017. ठीक है, so according to this the answer will be the fourth option. Next question, this was asked in December 2014. Riots and demonstrations are the examples of which of the following? ठीक है, तो इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए? इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स, नहीं, उनका नहीं होता है, दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देम. एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स, नहीं, इनका भी नहीं है. नॉन एसोसिएशनल, इसका भी नहीं है. एनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप्स का होता है ये. ठीक है, सो द आंसर विल बी द फोर्थ ऑप्शन. इसका आई विल जस्ट गिव यू द एक्सप्लेनेशन. In Gabriel Allman's typology, anomic interest groups are spontaneous, unorganized manifestations of interests, often marked by protests, riots, or demonstrations. They lack a formal structure or just like associational or institutional groups. ठीक है, तो अनोमिक इंटरेस्ट ग्रुप्स बेसिकली कोई भी सोशल मूवमेंट जैसा ही रहता है. ठीक है, देर इज़ नो स्ट्रक्चर, नो एज सच स्ट्रक्चर, नो फॉर्मल ग्रुपिंग, ऐसा कुछ भी नहीं होता. दे आर जनरली फॉर्म्ड ओनली टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर कॉज. उसके बाद में दे गेट डिसबैंडेड ऑटोमेटिकली. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 का है. द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन एक्सप्लेनिंग द मोबिलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स in comparative political analysis is given by which of the following scholars? So this was given by Marcus Olson. ठीक है, this is a fairly common simple question. इसका I'll give you the explanation.
Marcus Olson, in his seminal work The Logic of Collective Action, argued that the individuals in large groups may not act in their common interest unless motivated by personal gain or selective incentives. ठीक है? Explaining the free rider problem in interest group mobilization. तो this is a very important term, free rider problem. इसका मतलब यही है कि कोई बड़ा सा इंटरेस्ट ग्रुप है, उसके जो इंडिविजुअल्स रहेंगे ना, दे विल बी फ्री राइडर्स. वो दे वोंट बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग इनिशिएटिव या कुछ भी काम करने में. दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड बिकॉज दिस इज़ अ वेरी लार्ज इंटरेस्ट ग्रुप. तो उसमें ऑटोमेटिकली ऐसे लगता है कि हम नो वन वांट्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. सो दिस इज़ नोन एज द फ्री राइडर प्रॉब्लम. एंड ये कॉन्सेप्ट दिस वाज गिवन इन द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जनवरी 25 का है. Who among the following is the first to coin the term catch-all parties? So catch-all parties was given by Otto Kirchheimer. ठीक है. कैच-ऑल पार्टी का मीनिंग होता है कि द पार्टीज दैट ब्रॉडन देयर अपील बियॉन्ड अ सिंगल आइडियोलॉजी और क्लास. मतलब दे डू नॉट हैव वन सिंगल आइडियोलॉजी. ठीक है. कोई भी एक आइडियोलॉजी पे बेस्ड नहीं होते हैं. दे इंस्टेड आर ऑल इनकम्पासिंग पार्टीज होती हैं. ठीक है. वो बहुत सारे आइडियोलॉजीज को मिक्स करके दे फॉर्म देयर manifestos, and those are known as catch-all parties. Next question January 25 का है. In which year was the 19th Chinese Communist Party conference held in Beijing? So this is slightly tough. इसमें करंट अफेयर्स से भी ज़्यादा ही टफ लगता है मेरे को ये क्वेश्चन. इसका आंसर इज़ 2017. ठीक है. The 19th National Congress of the Chinese Communist Party was held in Beijing in 2017. So this is not a very important question since ये थोड़ा bouncer question type है. Very few people will be able to answer this question and this is not something which you should target. ठीक है. You should target these mainstream questions जो बिल्कुल ही अपने सिलेबस से पूछे गए हैं ना, उनको you should target. और ये ऐसे bouncer type questions पे just ignore them. ठीक है. So that is all for this video. Thank you. Please like, share and subscribe to our channel if you found this video helpful.